यस, जो हमारी बोरोन की कंपोजिशन की परसेंटेज होगी, किसी के भी अगर तुम्हें कंपोजिशन निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो उसका अमाउंट मतलब पार्ट कितना है बाय होल, टोटल होल कितना है इंटू 100, तो परसेंटेज में हो जाएगा. So boron is how much? Boron is 0.096 and the whole part, the whole sample is 0.24 and multiplied by 100. इसे solve करो जल्दी से, बताओ what will be the boron percentage. खुद से try करो पहले. How will you do it? Decimals में deal करना आता है, I hope so. So यहाँ पे 3 है तो 3 नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे 2 हैं तो 2 ऊपर चले जाएंगे, तो you can write 2 decimals ऐसे, 2 zeros. So 2 जीरो से 2 जीरो गए, एक से एक भाई साहब गए, 24 4 जा होता है 96, तो 40%. Yes, how many of you got this boron percentage? Yes. Yes, sir. तो tell me the oxygen Yes, percentage sir. in the similar fashion. Oxygen percentage निकाल के दिखाओ मेरे को, बिल्कुल ऐसे ही. दो बहुत ही easy है. Sir, 60%. 60%. You can calculate directly since this is 40%. Oxygen must be 60%, right? Or you can just calculate oxygen percent. That's 0.144 over 0.24 into 100. So फिर से इसके 2 zeros थे तो 2 zeros ऊपर, इसके 3 zeros हैं तो 3 zeros नीचे. So 2 से 2 गए, 1 से 1 गया. That's 24 times 6 I guess and 60%, right? So पहला question is really easy. सबको सामने आ गया? Percentage composition का मतलब? Yes. Yes, sir. So remember this formula, okay? Percentage composition अगर समझना है और अच्छे से. So let's go to the second one. Now this time Yash will read if he is able to. Yes, Yash. When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen? आगे भी है question. Which law of chemical Which law of combination chemical will govern your combination answer? will give the one your answer? देखो भाई, the question itself says 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. So it says कभी भी अगर if we take 3 gram of carbon और ऑक्सीजन लेते हैं हम 8 ग्राम, तो हमेशा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है 11 ग्राम. Always. So this is actually a constant proportion. If you remember, 3:8 में combine हो रहे हैं हमेशा, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में होते थे. तो अगर तुम ये 3 ग्राम लो और ऑक्सीजन बेशक 50 ग्राम ले लो, still 3 gram will only combine with 8 gram because of the law. It won't combine with other 42 gram. So the other 42 gram will remain unreacted. Okay, unreacted. It will not react. Okay, why? Because law of constant proportion. 3 gram will only react with 8 gram. अगर ये ज्यादा तो फिर बात भी होती, लेकिन 3 gram will only react with the 8 gram and will give us again 11 gram. So are you people getting it? Yes. क्वेश्चन फिर से समझ लो. क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि 3 ग्राम 8 ग्राम के साथ रिएक्ट करते हैं, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. सो एक्चुअली दे गिव अस द कांस्टेंट प्रोपोर्शन ओवर हियर. So what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? The same one. The same amount will be formed because the left out 42 gram will remain unreactive because of the law of constant proportion. Which law of chemical combination will govern your answer? Law of constant proportion. Make sense to everyone? Yes or no? No, sir. पूछो क्या डाउट है. अगर मान लो मैं तुम्हें ऐसे देता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म वाटर. इसका जो 1 ग्राम है 8 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है,
ठीक है, और कुछ बना रहे हैं, मान लो 24 ग्राम्स बना रहे हैं। ओके ओके, 24 ग्राम्स कैसे बनाएगा, 9 ग्राम बना रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अब ऑक्सीजन ले लूं, हाइड्रोजन तो 1 ग्राम ही ले रहा हूं मैं, ऑक्सीजन ले लूं 20 ग्राम, तो तुम्हें बताना है कि H2O कितना फॉर्म होगा। अब तुम्हें पता है कि 1:8 में हमेशा 1:8 में कंबाइन करेगा, चेंज नहीं होगा, तो 1 ग्राम अभी भी 8 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, जो बाकी 12 ग्राम है वो अनरिएक्टिव रह जाएगा और फिर से 9 ग्राम ही फॉर्म होगा। अगर इसमें कुछ वेरी होता हाइड्रोजन तो बात होती, लेकिन इसमें कुछ वेरी ही नहीं था, तो मतलब कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही फॉलो होगा। यस, इज दिस क्लियर विद नाउ? यस, विद दिस एग्जांपल? Yes, sir. ओके ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो डन। सबको क्लियर है फर्स्ट 2 क्वेश्चंस? तभी आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. Okay. Let's move to the third one. What are polyatomic ions? Yes, polyatomic ions. Poly means many. So many atoms will be there. Ions mean the charges. So polyatomic ion is a group of atoms. You can write it somewhere. Group of atoms carrying a charge. It can be a positive charge or a negative charge. For example, if I give you hydroxide ion, so this is a polyatomic ion because there are 2 atoms and are negative charge, so there is a charge as well. Ammonium ion, now here are number of atoms, many atoms are there. Hydrogen 4, 1 nitrogen, and there is a charge. So another example. Carbonate ion, okay, there are many examples like these. Sulfate ion, you can say sulfate ion. Give any 2 examples, okay, and it will be done. Yes, clear with the polyatomic ions? क्या होते हैं polyatomic ions? Yes, sir. Really Yes, good. sir. Okay, now the fourth question uses the valency table which I taught you during the notes. So let's see if we can write these formulas. So magnesium and chloride. Magnesium chloride. So magnesium and chloride. What was the valency for magnesium? If you don't have the table, bring out the table. It's okay. You can remember it later on. Or you can use the book. Book में भी होगा valency table. Yes, Tushti 2. Very good. So magnesium की valency 2 होती है, chlorine की 1 होती है. Okay, you can use the chat feature if you are not able to use the microphone. So cross multiply करते थे, if you remember. So that will be magnesium Cl2, and that's the formula. Make sense? Yes, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Now calcium oxide, calcium and oxygen. Okay, so calcium ki, if you remember, it's 2. If we want to write in the charges 2 plus, and it should be 2 minus. So ये कट जाएंगे, 1 हो जाएगा दोनों. So it's actually calcium oxide only. So this is the formula. Okay, 1 and 1. We don't write 1 and 1. Okay, so that's the formula for calcium oxide. That's done. What about copper nitrate? Copper nitrate is this guy. This guy is called nitrate. So can anyone tell me the valencies for copper? Is Cu3NO. Cu3NO3, NO3 होगा बच्चे, नाइट्रेट. अब देखो यहाँ पे NO3 का नाइट्रेट का होता है 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CuNO3 ट्वाइस, ये बनेगा फॉर्मूला. क्लियर? NO3 की नाइट्रेट की 1 होती है, ठीक है, याद रहे, 1 माइनस एक्चुअली. ठीक है, इट इज एनायन. एनायन क्या होते हैं? जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. चलो लेट्स ट्राई एल्यूमिनियम. इतने तो क्लियर है, पहले 3 क्लियर हैं? यस. Yes. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में, इसे बार बार कर लेना है. लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन देन. एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम एंड क्लोराइड, व्हाट वाज द वैलेंसी फॉर एल्यूमिनियम? यस, 3. good. Drishti also told me 3. Chlorine is 1, so let's cross multiply. It's AlCl3 and we are done. How easy it is, right? Let's move to calcium carbonate. Calcium carbonate, it's 2 plus, it's 2 minus, if you remember, right? So if you cross multiply these guys, this will cancel out. That's 1 only. So calcium carbonate is this only, right? So we have kind of
solved all the parts here, each and every one. Let me revise it again. Magnesium chloride, calcium oxide, copper nitrate, aluminium chloride, calcium carbonate. These are the 5 solutions. Clear to everyone? Yes. Yes बच्चों, clear सर है? लास्ट वाला नहीं आया. Calcium carbonate, calcium carbonate, right? कैल्शियम की 2+ होती है और कार्बोनेट की 2- होती है. ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, काट दो बेशक 1 1, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, 1 लिखते ही नहीं हम, राइट? So that's the Okay. stuff. Really easy. So fourth one is also done. Yes, सबको clear है? Then we will move forward. Yes or no? Yes, sir. Okay, good, good. So fourth one is done. Let's move to the fifth one then, right? The fifth one. Give the names of the elements present in the following compounds. See, these are some, you will say, common names, okay? Laboratory names, you can say. So, just a second. Yes, so let's figure these compounds. You have to actually remember them, okay? These will be useful in your higher grades as well. Just remember them. Quicklime. See, क्विकलाइम जो है हमारा, ये बंदा क्विकलाइम कहलाता है. कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम कहते हैं. ओके, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमें वो भी बताना है. तो एलिमेंट्स कौन कौन से? कैल्शियम और ऑक्सीजन. सो वी विल काइंड ऑफ प्रिपेयर अ टेबल लाइक दिस. राइट द क्विकलाइम ओवर हियर, here the name, sorry, here the chemical formula and the elements over here, calcium and oxygen. इस तरीके से करोगे तो अच्छा लगेगा, right? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड तो HBr कहा जाता है. हाँ ठीक है, HBr कहा जाता है, और हाइड्रोजन और ब्रोमीन होगा इसमें. बेकिंग पाउडर, really important. You have to remember these for now. Baking powder is this guy, NaHCO3. This is called baking powder. Here you have sodium, hydrogen, carbon, and oxygen. Okay, these are the atoms present, right? Elements present. Potassium sulfate, potassium sulfate. It's K2SO4, K2SO4. Now here you have potassium, sulfur, and oxygen. So fifth question is like you have to mug it up. Once you will mug it up, you will remember this. Don't worry, because this will be repeated in your future classes again and again. So is this clear? Yes or no? Fifth one. And you will answer this in this manner only, okay? If you want to get full marks, okay? So that's the question. Yes, bhai, sabko clear hai? Yes, sir. Okay. So let's move to the sixth part then. Sixth part तुम लोगों को आता है, तुम लोग जल्दी से करके दिखाओगे मुझे, right? चलो तो करके दिखाओ. मोलर मास याद है ना? मॉलिक्यूलर मास. जल्दी से C2H2 इन सबका निकालो. चलो एक एक करके फिर मैं पूछूंगा, पहले निकाल लो सबका. मैं कुछ होगा वो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे. एटॉमिक मास अगर तुम लोगों को जरूरत है, 32 ग्राम होता है सल्फर का. फॉस्फोरस का 31 ग्राम होता है. क्लोरीन का 35.5 होता है. दो तुम्हें याद होनी चाहिए अभी, बस और नहीं लिख रहा मैं, और सब तुम्हें आते हैं. सबका निकालो. मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास. आज हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट ग्रेविटेशन. किसी के स्कूल में हो गया ग्रेविटेशन? Yes, sir. हो गया. और कल तुम लोगों का सर्कल्स का 4th एक्सरसाइज का टेस्ट है. जिसने सेशन अटेंड नहीं किया था, वीडियो देख सकता है, वे भी मैंने डाली थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे. ठीक है, पूरी जो कल सेशन हुआ था उसकी वीडियो. So don't forget to revise that. Just look at the video, it's of 30 minutes. अरे भैया अनिरुद्ध, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो?
I'm asking you the molar mass. तुम आगे पढ़ गए. You have to find out the sixth question. Mass of every question. Mass of every part. So let's see. The first one. किसी का आया first one? 26. Good. Gram. Okay, don't forget the gram. And for the B part, it's 8 times 32, right? What will you get if you do 8 times 32? 256 gram. Okay. What about the first one? 4 times 31? 124 gram. And this guy, 1 plus 35.5, right? That's 36.5 gram. ये वाला खुद करो, बताओ मुझे HNO3. Yes, कोई चैट में बोल रहा है, तुष्टि ने बताया 63 ग्राम. बिल्कुल सही आंसर तुष्टि, वेरी गुड. See, hydrogen is 1, so 1. Nitrogen is 1, so 14. Oxygens are 3, so 3 times what? 16, right? So this will be 15 plus 48, which gives me 63 gram. Sixth question clear? Yes, everyone? Yes, sir. Really easy, right? हमने तो इससे भी difficult कितने questions की practice करी है. This chapter is really easy. Now again we have mole concept, right? Mole concept के फिर से questions. So what I'm going to do, हमने पहले भी बोला था कि भाई क्या करना, एक शॉर्ट सी कॉपी सी बना लेना, उसमें सारे के सारे ये मोल के क्वेश्चन एक जगह रख लेना. So let me take this onto our whiteboard. ठीक है, whiteboard पे ले चलते हैं और मोल कंसेप्ट की थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं. So let me just take a minute over here. Even mole concept is uploaded now on the channel, so don't forget. I'm not asking you to subscribe or anything. Don't forget to revise, okay? मुझे क्या मिलेगा सब्सक्राइब करवा के. ये कहाँ गया भैया? Just a second. This one. Let's do more practice on mole. देखते हैं तुम लोग भूल गए हो क्या मोल को. What, this was a chart. Remember I told you this way you can do any kind of mole question, right? And if you remember the concept of the mole, that is also good. So what is the mass of 1 mole of nitrogen atom? Mass of 1 14 mole of gram. nitrogen atom. Very good. 14 So gram. 14 gram. How you solved it? 1 mole के mass निकालने किससे multiply कर दिया? Molar mass, right? So we will multiply that by 14 gram. We will get 14 gram, right? So that is the molar mass. 4 moles of aluminium atoms. एक मोल का मास होता है हमारे मोलर मास के बराबर. 4 मोल का कितने के बराबर होगा? 4 into 27, राइट? मेक सेंस? या फिर इस वाले लॉजिक से देख लो, अगर मोल से हमें मास इन ग्राम पे जाना है तो मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से. मोलर मास या फिर एटॉमिक मास, राइट? यस. What will be the B part answer? 27 times 4 is what? 28. 108 gram, right? Clear to everyone? Yes, Tushti, very good. Yes, sir. How about the third part? Try it on your own. 10 moles of sodium sulfide. तो सबसे पहले 1 मोल का मास निकालो. अब 1 मोल का कैसे निकालोगे? पहले 1 मोल के मास के लिए तुम्हें मोलर मास पता होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है हमें मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स को. सोडियम का मैं बस एटॉमिक मास बता रहा हूँ, तुम लोग खुद ही करोगे. सोडियम का 23 होता है और सल्फर का होता है 32. ऑक्सीजन का यू नो इट्स 16. सो सोडियम का इतना और सल्फर का इतना. Let's see if we can figure out this answer. C part. I'll just come.
Sir, 1260 gram. वेरी गुड। और किसी का आया यही सेम? कामना का सही आया है, सेम आंसर should be there. See how we will calculate it. Na2, that's molar mass I am finding out first of all. Molar mass or molecular mass you say. 2 times 23 plus 32 because there is only one sulfur, and 3 times 16. It gives me total of 126 gram, right? Now ये एक मोल का Yes, मास sir. होता है मोलर मास के बराबर, तो 10 मोल का कितने के बराबर होगा? 10 times. So that should be 1260 gram, right? Seventh question is done. Let's come to the eighth one then. Eighth one. Convert into mole. So we have to convert into mole. If the mass in gram is given, how can we convert into mole if mass in gram is given? First of all, divide by molar mass, we will get number of moles, right? First of all क्या यही करना है, because moles ही तो चाहिए. So मतलब हमें क्या करना है अब? Divide करना है molar mass से. पहले हम multiply कर रहे थे. See कितनी practice हो रही है हमारी. So molar mass से divide करना है. तो oxygen का molar mass क्या होता है? Oxygen gas है, remember, not atom. So molar mass of oxygen gas will be what? 2 times 16, that's 32 gram, right? So अगर मेरे को number of moles निकालना है तो क्या करना होगा? 12 ग्राम को mass in gram को molar mass से divide according to this chart. So 2 times 6, 2 times 16, 2 times 3, 2 times 8, that's 3 over 8. इसको decimals में कर लो. 8 3 is 24, around 0.3 moles, right? सामने आया पहला पार्ट, yes or no? Yes, sir. चलो तो जल्दी से मेरे को सेकंड पार्ट भी करके दिखाओ. बिल्कुल इसी तरीके से. Yes, Anirudh, very good, correct answer. So what we will do, और कोई भी है? Yes, Drishti, very good, correct answer. So it's 20, right, divided by the molar mass of water. What is the molar mass of water? It's 18 gram, right? So if I divide these guys, I will get 1.11 moles. Okay, so that's the answer. How about the C part? Try the C part as well, similar way. C part is the easiest actually because things will be easy to simplify here. दृष्टि का नेटवर्क इशू हो रहा है, बार बार सर से बोल रही है, may I come in, sir? Yes, C part. Good, Anirudh. The states 0.5. How? 22 gram is the mass of carbon dioxide given. Now what's the molar mass of carbon dioxide? It's 12 plus. Sir, हमें denominator में क्या रखना है? Denominator molar mass रखना है. देखो ना, number of moles से, sorry, mass in gram से अगर number of moles पे जाना है, divide by molar mass, right? Isn't it? So mass in gram से अगर तुम्हें number of moles पे जाना है तो किससे divide करेंगे? Molar mass से. जो भी दे रखा है उसका मोलर मास निकालो पहले, राइट? तो ये 44 ग्राम. सो 22 ग्राम को अगर मैं 44 से डिवाइड करूंगा तो 1/2 आ जाएगा, दैट इज 0.5 मोल. समझ आया? देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम? मास इन ग्राम को किससे डिवाइड कर रहे हैं? मोलर मास से. बस यही करे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं. समझ आया? यस और नो? Yes, sir.
ठीक है. So let's try the ninth one then quickly. What is the mass of this much amount of mole of oxygen atom? अब तुम्हें क्या करना है, मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं. तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, देखो नंबर ऑफ मोल से मास पे जाना है, राइट. तो मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से. Let's see if, and this time it's atoms, okay, not gas, remember. वैसे यहाँ पे एटम्स भी होगा, फिर भी तुम क्या लोगे, चलो ठीक है, लो 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 16 ही लो. ऑक्सीजन ही लोगे, not O2, because you have oxygen atoms. If it was oxygen gas, so O2 लेते फिर. तो क्या करेंगे, इसको 16 से मल्टीप्लाई करना होगा अगर तुम्हें मास इन ग्राम चाहिए. कैसे निकालते हैं मास इन ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास से. तो 0.2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास कितना आएगा 16, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो. So 32/10, that's 3.2 ग्राम. 3.2 ग्राम. सबने आया भाई, बी पार्ट करके दिखाओ खुद से. फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ कि तुम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है इसकी. Now this is water molecule. Good Anirudh, it's 9 ग्राम. So हमें कैसे किया है ये, बिल्कुल सेम मेथड से. क्या करेंगे, मास इन ग्राम निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई. सो 0.5 को मोलर मास क्या होगा वाटर का, 18 ग्राम, राइट. 18. सो इससे मल्टीप्लाई करो, 5/2, that's 9, right? So 9 gram. Good, you are getting really good at this. Let's try the 10th and the 11th one. Last two questions for today. Now, read out the question, Kamna. Yes. Calculate the number of molecules of sulfur present in 16 gram of solid sulfur. तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है. मास इन ग्राम से कहाँ जाना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो या फिर पार्टिकल्स, एक ही बात है. पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, एवरीथिंग. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे. तो कैसे करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे मोलर मास से ताकि हमारे नंबर ऑफ मोल्स आए, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से ताकि हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए, राइट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए. सो लेट्स डू दिस. सो हमारे पास, जस्ट अ सेकंड, तुम लोग ट्राई करो जरा से. Yes. So we were doing this question. So mass in gram. Given कितना है mass in gram? 16, right? Now dividing by molar mass. Molar mass क्या आएगा सल्फर का? सल्फर के एक का कितना 256 होता है? ग्राम. वेरी गुड. एक का 32 होता है. So molar mass कितना आएगा? 8 times S8. That's 32 gram. That's 256 gram. Right. Now number of moles अगर मैं निकालूं, so कैसे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, मास इन ग्राम को किससे डिवाइड कर देंगे, मोलर मास से. 16 को 256 से, राइट. ये किया. अब इसको सॉल्व कर लो या फिर इसको अभी ऐसे रहने दो. उसके बाद अब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी, या फिर मॉलिक्यूल्स कह लो, 16/256 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर. व्हाट वाज द एवोगैड्रो नंबर, क्विकली. 10
10 raised to power 23, right? Jogs your memory. Now let's solve this. Let's see if we can solve this. Does 256 comes in 16 table? It does, I guess. 16 times 16. That's 36. 12, that's 15. Yeah, it does. So 16 times 16, right? So 6.022 raised to power 10 to the power 23 over 16, right? Let's do this calculation now. So अगर मैं इसका एक जीरो ले लूं ताकि तुम लोगों के लिए इजी बन जाए थोड़ा, तो 60.22 into 10 to the power 22 divided by 16. अब जरा इसको डिवाइड करके देखो. जब इसको डिवाइड करोगे, you will get somewhere around 3.76 approx. I'm telling you approx. Okay, जब इसको इससे डिवाइड करोगे, right? और 10 raised to power 22. This is an approx answer. Okay. सामने आया? Yes or no? कोई डाउट है तो पूछो. If you are having difficulty dividing this, what you can do, you can take these zeros here, then 6022 divided by 1600, right? That you can do. That's the easy way out. I take 1 0, borrow 1 0 from here so that you can make it bigger than the 16, right? Because अभी ये छोटा था, 6 था, अभी 60 हो जाएगा, इसलिए मैंने एक borrow किया. समझे आया क्वेश्चन? Yes, that should be your answer. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11 इजी है, तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना, ये होमवर्क है तुम लोगों का, क्योंकि हमने कर लिए हैं इतने क्वेश्चन सब. सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स खत्म हो गया फाइनली. एंड तुम लोगों को सर्कल्स का कल टेस्ट है, तो डोंट फॉरगेट द सर्कल. आई एम शोइंग यू द वीडियो हियर, जो सर्कल का कल टेस्ट होगा. तो धीरे धीरे मैं सारी अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर फ्री. आई एम फोकसिंग अगेन. सो यहाँ पे तुम्हारा सर्कल है. जिस एक्सरसाइज का टेस्ट होगा वो 4 और 7 में होगी, आई गेस. नो, यस, 3, 4 और 7 में होनी चाहिए, आई गेस, वीडियो में. तो इन तीनों वीडियो को बार बार देखना है अगर कल वाला टेस्ट करना है. ठीक है, चलो, तो कल मिलते हैं फिर. टेक केयर, बाय, गुड इवनिंग. Good evening, sir. गुड इवनिंग.